क्या बात है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल कहाँ थे भाई? सर कल दिन रिकवरी पार्लर पढ़ाई बंद कर देते नानी को के लिए। वेकेशन में तो आए ठीक है भाई, बताओ, where did we stop yesterday? Very good. Oh, any doubt in sound vector? Any concept? I don't think so. Huh? We have done enough. Okay, let's start class with fundamentals. Which next chapter you want me to start after this? सर नाइट Light? Oh, welcome. It seems you were on a long vacation, huh? Okay, heart of a man beats 75 times in a minute. Like in 60 seconds, number of beats, number of what beats? Heartbeats. Equal to how much? 75. So you have to find the frequency. Therefore, in 1 second, number of heartbeats will be 75 by 60. Okay? So that is nothing but frequency, isn't it? How much is this? 6 into 6, 6 to the 12. 1.25. So this is the frequency. Therefore, F is equal to 1.25. Because frequency is number of heartbeat. One heartbeat is one cycle. So number of cycles in 1 second. Okay. So one beat is one cycle. Loved up, loved up, loved up, like that. Okay. So that's part A. And what is part B? Time period is equal to 1 by F. So this is what? 1 by 1.25. This is equal to 100 divided by 125. Which is 4 by 5, which is 0.8 second. So for one heartbeat, it is taking 0.1 second. That's what it means. So hertz is nothing but number of heartbeats per second. It's one and the same thing. Hertz means number of heartbeats in 1 second. Okay, so either you write hertz or 1 by s or per second. Both are same. Second variable. Separation between two consecutive crests in a transverse wave is 100 meter. That means what is given? wavelength Yes. 100 meter. If the wave velocity is 20 meter per second, what is the frequency of the wave? So that should be easy since V is equal to F lambda. Therefore, F is equal to V by lambda. Zero point 0.2. So the answer is 0.2.
So what is given is, how to do question 3? So one drop and one crest is one cycle or one oscillation. So 0.4 second में 40 oscillation. 1 second में क्या हो जाएगा? 40 divided by 0.4. Okay. So हमको निकालना है number of oscillation in 1 second. Since in 0.4 second, number of oscillation is equal to 40. Therefore, in 1 second, number of oscillation is equal to 0.4. So this is how much? 400 by 400. Therefore, frequency f is equal to 100 oscillations per second or 100 hertz. This is what it is. So these are fairly easy questions. Next question you should be able to do yourself. Question 4. What is question 4? Time interval between lightning flash. So given t is equal to 5 seconds. The speed of sound in air is 330 meters per second. Find the distance of the flash from the observer. So d is equal to d by t. Therefore, t is equal to okay. So it is a simple speed and distance formula. Okay. So what is the distance between A and B? These are two tanks separated. What is the distance of separation? 510. Okay. So he hears T1, two sounds after 2 seconds. And T2 is equal to 3.5. Okay. So what is the time here in this case? 1.5 seconds. तो उसको सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड निकालो.
तो साउंड यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा इसको 3.5 सेकंड, और यहाँ से आने में 2 सेकंड लगा होगा, तो साउंड को यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 3.5 minus 2. So when the distance covered by sound is d is equal to 510, है ना? Isn't it? So these are two tanks. They are firing at each other at the same instant, and the observer is sitting some distance away in the same line. So the observer hears two sounds. Obviously two sounds, because this sound generated here will reach the observer little later than the sound generated by tank A. Tank A sound is heard after 2 seconds, and tank B sound is heard after 3.5 seconds. Although both sound happened at the same time. So due to the different distance of the tanks from the observer, there is a difference at which the sounds are respective sounds are heard. So you have to find what is the speed of sound. So this is how you'll find the speed of sound. So V is equal to d by P. So to travel distance 510, sound must have taken 1.5 seconds. Okay, find out how much is the answer. So this will be 5100 divided by 15. Yes. 5105. This is 3, these are 9, 3, 6 left. We'll pause it first. It's about 340 meter or so. Everybody understood how we did it? Huh? Next question, question 6. Now try some questions yourself. And I'll help in case you're stuck. So normal formula summary that I gave you yesterday. Only one question remaining. You can do it yourself. Try yourself. You missed 2 questions. You will sign the attendance with return.
More questions? Yes, anybody needs help? Okay, straightforward question. So then we have next chapter is light. We have done all previous chapters, right? What reflection of light? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं किया तो वो स्टार्ट कर दो उसके बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म बचेगा बराबर लेट अस स्टार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट So can you wait for me? नो आर यू कॉपिंग फर्स्ट टू न्यूमेरिकल्स ठीक है ठीक है so is it done is this chapter done in school Yes, sir. okay so are you thorough with it तो फिर इसमें क्या फर्क No, sir, reflection of light is not. है yes it's reflection right so any question remaining in sound any doubt any question in sound anybody okay so we'll solve it when you have it in there so what is light what is it That form of energy. yes which lets us See object. think around again so light is a form of energy that lets us see things around us are you able to see this man can you explain the seeing mechanism Yes. what is happening Yes, sir. how When the light is falling on the object and it is getting reflected in our eyes, the eyes can see it. Can everyone see it? Yes. So that is reflected light is in all directions. Even I can see this. Okay? So we see things. So we have to understand what is reflection, right? Okay, so we see things or objects when light falling on the object gets reflected towards us. Okay, so we see objects only when the light falls on the object gets reflected towards us. So let us understand what is reflection. So how do you explain reflection of light? The back of light is Where? in our eyes. Center. In the same medium. Okay. It is the bouncing back of light in the same medium, and I use the word ray. Okay, for example, so who bounces back the light? The rays. Hmm? Rays.
Surface of the object. Yes. By the surface of object. So depending upon the nature of surface of the object, reflection also will be of different type. Okay. So if the surface is smooth, the first is case one. Reflection by smooth surface. What is the example of smooth surface? A mirror. Okay. It is also called as regular reflection. There are different types of reflection, regular and irregular. So if the surface is smooth, let's say this is our mirror and I'm dash. Let's say a light is incident at point O. Okay, let's name this light ray AO. So it is incident at O. So O is called point of incidence. Okay, and let's call this as NO. So NO is the imaginary perpendicular I have drawn on this plane surface. And this is called the normal. Okay. So the incident ray AO, the angle it makes with the normal is called angle of incidence. Okay. Now, this is the incident medium. Let's say the medium was air through which the light came. So it will be bounced back in air and it will make same angle as I. Yeah. So angle of incidence will be equal to angle of reflection. Let us say this is B. Okay. So this is, let's write down. So mm dash is here, mirror, which is the reflecting surface. Surface. Then what do you have? So the angle is, this one is looking less. So don't do this. In diagram, you measure it with protractor, then you make the proper angle. Now, Now also, now it is okay. So what is this? Then MM is mirror. Then you have O is point of incidence. can we copy? Here, parallelly keep writing. O is point of incidence. When I explain that time you listen, but otherwise you can. NO is normal. Basically, that is a perpendicular at O. Okay, perpendicular at point of incidence. AO is incident ray. Right? OB is reflected ray. Angle I is angle of incidence. Of reflected.
You have to be very clear. The incident ray direction is towards the surface, and reflected ray direction is away from the surface. The direction are very important in ray diagrams. Okay. Now let me also tell you, we are using ray. So what is a ray? Ray indicates the path of light. Ray only tells you path of light. But when you have a source of light, it emits infinite number of rays. Let's say you have a torch. When you switch on the torch, it's not just single path of light. There is a bunch of rays moving together in same direction. So that is called as beam. Okay. So beam is basically bunch of rays. Yeah. So when we say regular, what do I mean by regular reflection? So if it is a beam, right, the incident ray will not have just one ray, it will have multiple rays. Just take this. Okay, so they are traveling together. So at every, so now to draw the reflected ray, you have to have a, so these are different point of view. Everywhere you draw the normal. So everywhere you get this angle of incidence. Then you construct equal angle on the other side. So you find that all the rays are parallel. The reflected rays are also parallel. So when this kind of reflection takes place, it is called regular reflection. All the incident rays are anyways parallel, always, right? And reflected rays are also parallel. During regular reflection, the reflected rays are also parallel to each other. Reflected rays. And reflection of light obeys laws of reflection. That also I'll give you. It is two parts. One is angle of incidence is equal to angle of reflection. The second part is the incident ray, the reflected ray, and the normal all lie in the same plane at the point of incidence. And normal at the point of incidence. Lie in the same plane.
in plane. Together it makes laws of reflection. Right? Okay. Now, laws of reflection are obeyed everywhere for any reflection, whether regular or irregular. Okay. So we have seen the regular reflection case. Now we will see irregular reflection case. Okay. Right. Only thing is how to draw the reflected ray. Also, only the diagrams will come from this chapter. Ray diagrams, numericals. Yes. Many numericals are known. So how have you constructed the reflected ray? So you require normal. Without normal, neither you can make angle of incidence nor you can make angle of reflection. So what is the normal on the plane surface? Huh? Perpendicular. What is the normal on the plane surface? Perpendicular at the point of incidence. Where the point of incidence is the foot of the normal. Here. So how many normals are here in this case? Three normals are. All of them have different point of incidence. Correspondingly, they have their respective angle of incidence and angle of reflections. And all the angle of incidence and angle of reflection are same in regular reflection or reflection by plane or smooth surface. Now let us discuss case 2, reflection by rough surface. The example of plane surface was plane mirror. So what is a plane mirror? What is a plane mirror? Mirror is constant surface, which helps in reflection of light. Yeah. Like, is this a plane mirror? Is this a plane mirror or a glass? Glass. It's a transparent glass. How will it be? Can it be made as a mirror? By applying silver coating on the other side. Okay. So a plane mirror is a smooth glass surface on one side and a silver coating layer on the other side. Okay. So what is the importance of applying silver on the underside? So can you see yourself in a plane glass? So it helps in reflecting the light. Any shiny surface, anything that shines, okay, reflects. Otherwise, it will absorb light. Can this reflect light the way a silver mirror can? No. Let's say if you have a metallic surface, highly polished, you will see that yourself reflect. Like a car. Let's say a car is painted, right? You will see your image in there. So anything that shines reflects light. Okay. Is this shining right now? No. It will absorb light. It is also reflecting, but it is not reflecting enough so that we can see our image. Okay. So this is what it is. Can we see our image in this? Huh? Can we see our image in this? You're not able to see. When the lights are off, then you will. Okay. So I'll erase the left side.
Let's discuss case 2. Irregular reflection by rough surface. It is also called diffused reflection or scattering of light. Okay. So what is an example of rough surface? Is wall a smooth surface? So you will see some cavities, right? Uneven cavities. When you observe it carefully, you will see that some places there is depression and some places there is elevation. So it's uneven surface. So you may find the surface like this. A lot of deformities may be there. So only two laws of only two laws. Yes. Only two. Mathematical only one. What is the meaning of incident ray, reflected ray? They all lie in the same plane. I'll explain this. Let us say this is a reflecting surface, right? So this is the plane. If the light is incident in this plane, then it will be reflected in the same plane. I will change this plane. Let's say I rotate it around vertical axis. Normal. I rotate the plane around normal. Okay. Now if the light is incident here, let's say this is the point of view. Now it will be reflected in this plane. Understood? This is our. So this is the plane of incidence as well as reflection. So that's the plane of the second. Okay. What is the reflecting surface? This. All right. Now let us say we have a irregular surface like this. Then what do you do? Let us consider 3 light rays. So incident rays will all be parallel, right? Now if we observe the surface carefully, this is like some part of a sphere, right? This is also some part of a sphere, small sphere. And this is like a plane surface here, right? Okay. So if I complete the sphere, this will appear like this. This is small sphere. This is kind of a plane surface. You get it? So every surface has a different character now. So for a curve, what is the normal? Plane surface, the normal is perpendicular. For a curved surface, the normal is radius. Okay. So normal. So let's say this is the center of the sphere. Now the normal will be here. For this, the center is this. Normal will be over here. This is a plane surface. So normal is perpendicular. So for a curved surface, the normal is perpendicular to the tangent at that point. Let's say this is the point of incidence. Let us say this is the tangent. Here the tangent is this. Understood? Normal at a point on a curve is either perpendicular to the tangent at that point, or it is the radius of the
circle or sphere of which that surface is part of. ठीक है? So I'll write it. Explanation is for a curved surface. The normal at the point of normal is radius. सर सर एसी का टेम्परेचर बढ़ा है। बढ़ा दो हाँ मतलब ठंडी यही कर ठंडी लग रही है। बंद कर दो क्या फैन बंद कर दो सुशील भाई वो एसी बंद करने बोल रहे हो For a curved surface, the normal is radius at the point of. अब ये curved surface से point of incidence तो यहां से तुम radius हो imagine the center of the circle somewhere right या अगर center नहीं दिख रहा है तो वहां पे tangent बनाओ drawing a tangent at a curved surface is easy and then draw normal to the tangent or it is normal to the tangent at the point of incidence. सर नहीं समझ रहा। On the curved surface. नहीं समझ रहे उल्लू चल अच्छा ये सरफेस है दो सेमी सर्कल है सेंटर कहाँ होगा यहाँ होगा इसका सेंटर कहाँ होगा यहाँ पे होगा ठीक है मान ले हमारी एक लाइट इंसिडेंट है ऐसे ठीक है और हमारी लाइट यही डायरेक्शन में इधर भी इंसिडेंट है ठीक है ना अभी कैसे सरफेस है कर्व्ड सरफेस और एक लाइट मेरी यहाँ पे इंसिडेंट इंसिडेंट है और पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन ठीक है अब इसका मुझे नॉर्मल बनाना है तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसका है ये इधर तो नॉर्मल मेरा कैसा बनेगा इसको ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से रेडियस होना ना या तो रेडियस बनाओ या यहाँ पे टेंजेंट बनाओ पहले इसको टेंजेंट पता है क्या होता है टेंजेंट एट अ पॉइंट पता है क्या होता है टेंजेंट पढ़ा है मैथ्स में तो अगर कर्व सरफेस है तो यहाँ पे तुम टेंजेंट बनाओ वो प्लेन सरफेस हो उस पॉइंट फिर उसको नॉर्मल बनाना है तो उस पे परपेंडिकुलर बनाओ दोनों एक ही चीज है कर्व सरफेस पे जहां पे हमको नॉर्मल बनाना है वहां से रेडियस बना दो रेडियस इज द लाइन जॉइनिंग द सेंटर आप समझा कि नहीं तो नॉर्मल हमको क्यों चाहिए क्योंकि हमको चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ताकि हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बना कैसे पाएंगे जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस पता नहीं है तब तक हम रिफ्लेक्टेड रे नहीं बना सकते ना तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा ये होगा फर्स्ट स्टेप टू ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे इज टू ड्रॉ द नॉर्मल क्योंकि तभी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर कर पाएंगे then we have to draw the reflected ray making equal angle on the other side of the normal incident ray or reflected ray are on opposite side of the normal is that clear अभी भी नहीं समझा रेडियस वाला नहीं समझा टेंजेंट वाला समझती अरे अगर ये रे यहाँ पे इंसिडेंट होती इधर तो यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा ये होगा
This is incident along the normal only. सेंटर से जा रही है. सर इकोनॉमिक से हुआ फिर वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है. Yes. This ray is incident on the normal. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? 0. समझ आया? सर फिर वो जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उधर जैसे परपेंडिकुलर होता है वही होगा सर. ये ऑलमोस्ट सेंटर से ही जा रही है ना. समझ आएगी. देख एक और रे बताता हूँ. ये तो इंसिडेंट रेज विल ऑल बी पैरेलल, राइट? ये यहाँ आ गई. अब इसका नॉर्मल किधर है? इसका नॉर्मल ये हो गया. तो इसका रिफ्लेक्टेड रे कहाँ है? यहाँ है. समझ में आया? तो यहाँ पे इंसिडेंट रे मतलब रिफ्लेक्टेड रे एक इधर जा रहा है. ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे. ये तरह सेकंड इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड है. थर्ड वाला रिफ्लेक्टेड रे मेरा यहाँ चला गई. इंसिडेंट रे तो सब एक ही डायरेक्शन में है, 1 2 3. ये सब एक डायरेक्शन में है. लेकिन रिफ्लेक्टेड रे क्या है? 3 डैश. ये थर्ड वाला है. ये 2 डैश. ठीक है, 1 डैश. सो रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन सेम नहीं होता इररेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि नॉर्मल अलग अलग आता है हर जगह. और हर पॉइंट पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होगा. हर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाना पड़ेगा. समझ आया? तो सर सर्कल का जो सेंटर है उसका जो रेडियस है वही हमारा नॉर्मल यस. हाँ इंसिडेंट रेडियस चेंज नहीं होगा. हाँ, तो रेडियस लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में होगा ना हर एक के लिए. सेंटर एक ही है. तो इस पॉइंट से तुम रेडियस बनाओगे तो रेडियस का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो नॉर्मल है रेडियस ही, लेकिन कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है. अब देखो, अब ये अनइवन सरफेस का मैंने पार्ट लिया. कहीं पे डिप है, कहीं पे एलिवेशन और कहीं पे प्लेन सरफेस. अब यहाँ पे क्या नॉर्मल बनेगा? इधर बनेगा. हमने 3 रे देखे. ये 4th रे मेरी और ये मेरी 5th रे. 5 रे से एग्जांपल दे. अब इसका एंगल ये बना आई. इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बनेगा? ऐसे. ठीक है, ये हो गया. तो 4th का जो मेरा 4 डैश रिफ्लेक्टेड रे को मैं डैश लिख रहा हूं. तो देखो 1 डैश ये है, 2 डैश ये है, 3 डैश ये है. ये इधर गया. एक भी सेम डायरेक्शन में नहीं है रिफ्लेक्टेड रे. दैट्स व्हाई इट इज नॉट स्कैटर्ड और इररेगुलर रिफ्लेक्शन. अब यहाँ पे नॉर्मल क्या बनेगा मेरा? यहाँ पे नॉर्मल ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे आएगी? ये एंगल बना रिफ्लेक्टेड रे इधर आ गई. समझ आया? तो नॉर्मल को मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ. अगर ये रिफ्लेक्टिंग, ये साइड मान लो ऊपर वाला साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो नॉर्मल तो इधर बन रहा है, तो उसको एक्सटेंड करो बाहर. प्रोडक्ट आगे नहीं जा सकता. जाएगा ना? मेरे को अगर तो ऊपर एलिवेशन है तुझे बाउंस होगा ना इधर जो बाद का एलिवेशन है ऊपर. नहीं, मान लो इस पे टच नहीं हो रहा है, इधर से निकल गई सीधा. ठीक है, टच होता तो बाउंस हो जाता उधर से. तो 4 डैश मेरा. तो सब इररेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लाइट गो इन डिफरेंट डायरेक्शन. ठीक है, वो रियल लाइफ में स्कैटर्ड होता है ज्यादा ज्यादा. अगर एक स्पेशल सरफेस हमने बनाया है, अब जैसे यू सी ट्री, ऑल दी ऑब्जेक्ट्स दे आर इररेगुलर. ट्री हो गया, हिल्स हो गए. ठीक है, सो और ह्यूमन बॉडी सरफेस, इट इज नॉट लाइक रेगुलर सरफेस, लाइक अ ग्लास. समझ में आया? तो रियल लाइफ में जो रिफ्लेक्शन होता है कैसा होता है? इररेगुलर. एंड द रिफ्लेक्टेड रेज गो इन ऑल डायरेक्शंस. ठीक है, but mainly we are going to study reflection by plane surface, because however irregular the surface may be, at a micro level everything is plane only at a micro level, and law of reflection has to be obeyed at every point of view. Only the selection of normal differs.
But plane surface it will be perpendicular. And curved surface it becomes radius or perpendicular to the tangent at that point. Clear? Okay. If this concept is clear, rest of the chapter is very easy. So next point is, then you have angle of reflection, plane of incidence. Plane containing the incident ray and the normal is called plane of incidence. And plane containing the reflected ray and the normal is called plane of reflection. All that is clear. Now let us study formation of image by reflection. Wait. Done? Try to gather concept in irregular manner. Again, the diagram has become very easy, but have you got the concept? What is the concept here? So the center of the radius, so the center circle which is the radius acts as a normal for each. Okay, any point of on a curved surface, from the point of incidence, join it to the center or the radius. Radius from the point of incidence is normal. Radius from the point of incidence. क्योंकि radius तो हर जगह बनेगा ना सर्कल. So that is normal. ठीक. So don't worry about it too much. अगर नहीं समझेगा तो कोई प्रॉब्लम. Okay, now we'll discuss formation of image by reflection. So for image formation we require at least two rays. ठीक है? Ray diagram में
Now observe the step carefully. So reflection for us is reflection by plane surface. Let us say this is the object whose image I want to obtain. So I can take two rays. Let's say this is the first ray and this is the second ray. And but that point is object, how can they take us from the object? Can you see me? And the object. How are you able to see me? Falling on the object is now reflected by me. Am I emitting light? Am I a luminous object? No. I have some secondary source of light which is illuminating me. Light falling on me is now reflected towards everybody. All of them can see me. So this object, assume, is an illuminated object. From somewhere else, light is falling on this. That light is going in infinite direction because everybody can see that object. Understood? Object not necessarily has to be a source of light because we can see the source of light as well as objects which are not source of light. Understood? So let us say these two rays, although there are infinite rays going in all directions, right? But for image formation, I need two rays. So this is my mirror. So what do you see? Like you every day, all of us use mirror, right? So let's say I'm standing in front of the mirror. Imagine the mirror is placed here on this desk. So where will I see myself in the mirror? Right here or somewhere else? In the mirror right there I will see. Where is the image? Behind it. Yes, it will be behind the mirror at the same distance as the object distance from the mirror. So let's say this distance is 1 meter. So image will form behind the mirror, 1 meter behind the mirror. So what is the image distance from the object? 2 meter. What is the image distance from the object? 2 meter. Okay, image 1 meter behind you. Okay, stop there. Twice I expect the image to form here. If this is 1 meter, let us say I draw this dotted ray. One ray can pass along the normal also, right? So where do I expect this image to be? Somewhere here. Okay. Now now the observer is here. Let us say this is the observer. Okay. So I am watching myself in the mirror. Let's say this is a flower vase and I am standing here. Will I see the image of the flower vase from here? No. Yes. I will. So it is this situation. I'm not observing myself. I'm not observing myself. This is some object and I'm observing from somewhere else. So where will I see the image? There. So I'll draw the reflected ray. So I'll draw this and this angle will be equal. Then I draw the normal here again because I want another reflected. This time the angle will be bigger. Okay. So this I will feel that these rays are these rays parallel or diverging? Diverging. Are they converging? No, they are not diverging, spreading apart. This I will feel that these two rays are coming from here. So this is where the image is formed. Okay? The reflected ray appears to be emitting from here. Generally, how do we see the object? Can I see the object? Yes, because I can see the object directly.
Because light falling on the object or reaching to me directly also. I can see direct object as well as its image. So this is a virtual image. We'll discuss more about this later. Let him not erase the diagram.
तो पहले भी तो झूठ बोला था। नहीं तो पहले भी झूठ बोला था मैं यूपी को गिराया। नहीं ब्रांड चेंज कर रहा हूँ खबर है बच्चे मजाक नहीं कर रहे मजाक करते तो ऐसे नहीं बोल सकते मजाक करने के लिए इतने बहुत चीज है लास्ट है मेरा लास्ट दिन है तेरा। नहीं मतलब लास्ट मंथ है ये मतलब कितने आज 20 पर 10th में उधर ही कंटिन्यू करेगा। हाँ अच्छी Last class है इसका Yeah. क्यों 27 to 6 class है कल नहीं आएगा क्यों क्यों 26 है कल अगर उनका पैकिंग करना है नहीं संडे। हाँ संडे कल लेक्चर है फिजिक्स के लेक्चर मेरे यार वो करें तो मेरे को लगा 1 घंटा हो गया है देखा तो ट्रेन वाली अरे संडे फिक्स। कल तो ना बट it's their paper और तो बाद में उसको मेंशन है तेरा बारिश हो रही है सर बाहर। और वही टेंशन में आ गए अभी और छाता वीता सब अपन ने बंद कर दिया अभी इट्स pouring heavily सर but the weather is very unpredictable sir। अभी इतना दिन अभी थोड़ा टेम्परेचर धूप का फिर बारिश। घर में एसी चालू रखते हैं कि बंद बंद कौन एसी चालू रखता है घर में घर तो कूल हो जाता है सारा तुम जो ग्लोबल वार्मिंग है बाहर भेज रहे हो अभी धूप तो नेचर हैज टू बैलेंस इट नो This year the weather this year the weather we only are the reason for it we are producing so much heat so nature has to balance it out population growth carbon dioxide increasing क्या करेगा jungles cut अच्छा everybody likes swanky cars ईवी ईवी में यहाँ पे पोल्यूशन नहीं हो रहा है लेकिन the factories where those batteries are produced they are generating pollution छोड़ ले यार एंजॉय ओके छोड़ दो ज्यादा सोचने का नहीं हो सब अभी ये सब नहीं भी होता तो भी एक्सीडेंट हो गया आदमी जाता है जब तक नहीं है तब तक एंजॉय करती मजा लाइफ ओके this object this is image so we require two rays for the image to be formed now these rays are forming image inside our eye so that is image formation by lens you'll understand this image formation next year this year we are only सर learning about पूरा आ गया ना एक जरा एक चैप्टर आ गया mirror वाला reflection image formation by reflection पूरा आ गया image also is formed by refraction रिफ्लेक्शन भी हो गया तो वो पढ़ा है क्या होता है उसका इमेज फॉर्मेशन अभी आगे आएगा नेक्स्ट ईयर ठीक है तो इसमें लेंस आता है लेंस आंख के अंदर लेंस है मिरर नहीं और जो आई बॉल का जो बिहाइंड सरफेस है वो स्क्रीन है all those mechanisms you learn in the next year so what is virtual image there are two types of image virtual and real image ठीक है virtual image is obtained at a point where the reflected rays appear to diverge from. ठीक है कहाँ पे होता है it is formed at a point where the reflected rays appear to diverge from when extended backwards. समझ आया so it cannot be obtained on screen. Can it be obtained on screen? Huh? When you're watching yourself in a mirror, you see that your image is inside the mirror. Send your brother behind the mirror. Will you see you there? No. So you are seeing yourself only in the mirror. Although it appears to you that image is forming behind the mirror, but there is nothing behind the mirror. So that image cannot be obtained on screen. So where is then real image?
real image is formed when the reflected rays meet each other. Now look here. Can you see here? Reflected ray 1 dash and 3 dash are meeting at this point. When the reflected rays intersect each other, actually. So these two rays are intersecting each other here. So this is where the image will be formed. That is called real image. Okay. Now, there are certain differences between virtual and real image. Let us become familiar with that. Okay. So I'll just read through the differences. What is the first line? Read in the note. Real image is formed due to actual intersection of the reflected rays. I just showed you. Second, real image can be obtained on screen. You cannot obtain virtual, but real you can. Okay. A real image is inverted with respect to objects. So, for example, if this is the object, okay. Let's say this is the object. Then its image will be like this, inverted. Object is upright. The image will be inverted. That's real image. But in virtual image, the image is also upright. Virtual image is always upright. So virtual image is formed when the reflected rays meet if they are produced backwards. Again, I have shown you. So this has to be reflected rays when they are extended backward. We are meeting at this point. This is where the virtual image will be formed. Okay. So when you see yourself in mirror, your image appears. Let's say this is you. Inside the mirror, you appear like this or like this. Like this. Like this. But if this is how I'm looking. So image will be like this. It is laterally inverted. See, if the object is this, then image will not be this. It will be this. 180 degree. Left becomes right, right becomes left. There is a lateral inversion. Understood? Okay. See, for example, so here if it was E. Let's say E was like this. And here E will appear as this. Understood? So it will flip. So virtual image cannot be obtained at screen. And virtual image is erect with respect to the object, erect or upright. Both words are used. Then, what is the example of real image? Image of distant object formed by a concave mirror. Now it is talking about concave mirror. Have you seen what is concave mirror? Not yet. Yeah. It is a spherical mirror like this. So reflecting surface is red inwards. The outside is silver body. This is concave and this is Convex. convex. So this is reflecting surface bulging outwards. And this is silver body. Okay. So this kind of mirror does form real and inverted image if the object is far away from. Okay. Not parking convex. Convex is used everywhere in automobile. Real mirror is all convex. Maybe. Maybe. Concave. शेयरिंग के लिए concave या फिर plane भी use कर सकते प्लेन में सेम साइज लिखेगा concave में साइज बढ़ जाएगा वो हम देखेंगे अभी कैसे मैग्नीफाई होता है कैसे कम होगा कब उल्टा बनेगा कब सीधा बनेगा वो सब ठीक है सो वर्चुअल और रियल इमेज का डिफरेंस समझ में आ गया सो वी हैव ऑलरेडी सीन formation of image by reflection this is the case for point object तो ये वाला नहीं हो रहा है ऊपर वाला मत बनाना so this case is for point object
ठीक है, सेकेंड केस हम बनाएंगे फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। So in real life, we have objects which are big, extended objects, not point. Point was just to, you know, become familiarized with how the image formation takes place. Okay. So now let us say the mirror is like this. This is N1 dash. And I have now an extended object like this. Let's say I have a rod, okay, a small rod AB. So to draw the image, let's consider the end of the rod and take two rays from here. So using this analogy, the image of A shall be obtained somewhere here on the perpendicular at the same distance behind him. And this image should come here. सर कॉपी करने वाला मेरा हाँ सर कॉपी कर रहा हूँ ये इसको हाँ करो ठीक है। ऑब्वियसली अब तुम इसका नॉर्मल बनाओगे यहाँ पे, उसका रिफ्लेक्टेड रे बनाओगे, ये रिफ्लेक्टेड रे। इसको पीछे जब एक्सटेंड करोगे तो इट विल हिट समवेयर। वैसे इसका भी रिफ्लेक्टेड बनाओगे यहाँ पे, मतलब नॉर्मल बनाओगे पहले, और इसको भी बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो यहाँ देखिए, तो इसका इमेज ये पॉइंट बन गया। लाइकवाइज और दो रे लो तुम नीचे से, ठीक है, तो ये यहाँ पे बना। अब वैसे ही हर एक पॉइंट से दो दो रे लेते जाओगे, हर एक पॉइंट से, इधर देखो, हर एक पॉइंट से दो दो रे लेते जाओगे तो तुमको इसके बीच में भी पॉइंट्स मिलते जाएंगे। समझ आ गया? तूने इमेज जब मैं ड्रॉ कर रहा था सीक्वेंस चेक नहीं किया। देखा मेरा ये देखो पूरा ड्रॉ किया हुआ रे देखोगे तो सर फिर जाएगा। सीक्वेंस क्या है देखो, पहले तुमने ये रॉड बनाया ए बी, अब ए का दो रेज ले लो ए से, यही चीज, फिर यहाँ नॉर्मल बना के रिफ्लेक्ट करो, फिर इधर से एक्सटेंड करो पीछे, तो ये पॉइंट इसका इमेज बन गया। लास्ट का ले लो पॉइंट बी, इससे भी दो रे लो ओ समझा तो बी का इमेज यहाँ बन गया। ऐसे ही हर एक पॉइंट से दो दो रे जाएंगे, उसका पॉइंट मिलता जाएगा। फंडा क्या है, जितना ये पॉइंट इधर है उतना ही पीछे ये आएगा। समझ में आया? ये नजदीक, ये क्लोज आ गया तो ये भी क्लोज आएगा, वैसे सिमेट्रिक आएगा। तो हम एंड पॉइंट का दो बनाया और फिर वो दोनों को ज्वाइन करो। एक पॉइंट खींचना एक पॉइंट यस, रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड एक्सटेंड, वो लॉजिक है। तो हर पॉइंट से जो दो दो रे आएगी वो ऐसे ही करते हो, तो उसको तुम ज्वाइन करोगे। हमने डॉटेड क्यों लिखा है, क्योंकि वर्चुअल है, ये सब इमेजिनरी रे है, ये रियल रे नहीं। डॉटेड रेज आर इमेजिनरी, दे आर एक्सटेंडेड बैकवर्ड। तो यहां से जो भी देख रहा है उसको ऐसा फील हो रहा है कि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा, फिर वहां पे क्या है इमेज।
वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है हमारी आंखों की, रियल ऑब्जेक्ट सामने। इसका हमें फाइन नहीं दिख रहा मेरे को। वे वो एक छोटा सा प्रूव करेंगे। लेट्स टेक तो एफ ले लो, एफ। We want to show that the object distance in front of the mirror and the image distance behind mirror is equal. Okay. सर ये केस वन का ही एक्सपेरिमेंट है। हाँ, केस वन में तो ये प्रूव कर सकते हैं। सर कॉन्ग्रुएंट बस कॉन्ग्रुएंट लगा दो, हो जाएगा। yes sir. हाँ, Yes. yes, yes. These two angles are equal and angle I is equal to angle R. ठीक है, ये I equal to R है ना, तो ये alternate एंगल से ये एंगल I हो जाएगा और corresponding एंगल से ये R हो जाएगा। I equal to R. So this angle is equal to this angle, and this angle is equal to this angle. OF This, is equal to F5 हो गया। OF is equal to F5। this is common side. AF is equal to AF. सर वो तो हो जाएगा AAS। हाँ, तो AAS से हो गया कौन? AS नहीं होगा ना, ASA। यही तो इक्वल प्रूफ करना है। तो ये से क्या होगा, ये तो प्रूव करना है। प्रूव करने का सीधी जो यस, समझ आ गया ना? टू शो दैट OF is equal to FI. Just show that triangle OFA that is congruent to triangle IFA. So since तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। स्टेटमेंट रिज्यूम का बॉक्स बना दो। And सर इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा ना, गिवन
Where angle Sir, OF is normal. A by 7. Angle of E. Yeah, A dash KKN. ये क्या है corresponding angle. ठीक है ना? सर 90 डिग्रीज का रीजन क्या है? क्या चीज? नॉर्मल। हाँ नॉर्मल है. नॉर्मल लिया है. यहाँ से नॉर्मल लेगा. यहाँ से नॉर्मल लेगा तो इंसिडेंट रे वापस पीछे जाएगी. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना है ये. ठीक है. सर फिर 3 एंगल दिखती है। क्या प्रॉब्लम? क्या था ओएल पे इस कॉम्पोनेंट को हैंडल क्या है आई दिस इंप्लाइज ओएल इज इक्वल टू एफ. सर देखिए Corresponding parts of CP. सी 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 ये क्या है? Corresponding part of angles are found. In CPSE, we don't say CP, CTC, just CPC. Why corresponding parts of congruent angle? That's it. So that is understood. That it is already said it is congruent. Then why to write congruent again? We proved here it is congruent, right? यस सर So corresponding part of congruent triangle. Okay. But in ICSE, few things are different than the other standard things. And then no, it's not like that, but some terminologies they have kept different to differentiate themselves from others. So are we good till here? यस Now will we? हाँ? 7:30 बजे से पढ़ा रहा हूँ. 5:30 बजे उठ के 12:30 1:30 बजे सो के क्या बोला कैसे चलाएगा कंट्री चलाना है कि नहीं आगे ठीक है और भी प्राउडली रीडिंग इन द न्यूज़पेपर्स अबाउट यू सोना नहीं है भाई चलो 5 मिनट का ब्रेक दे दो प्लीज कितने बजे खत्म हो रहा है अपना क्लास 1:35 ठीक है चल 2 सांस ले ले ये बहुत फन चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है अगर समझ में आया तो
नहीं, it is equally, क्या कहता है उसको, scary. If you pay attention, it is fun. It is actually fun. At 9, 10 level, things are not difficult. They may be a bit lengthy. From here on, things will become lengthy. थोड़ा ज्यादा टाइम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं होगा. You pay attention, you get it easily. So you can reduce your effort by listening to the teacher carefully. If you don't pay attention, you miss it, then you have to do self-study. That like 10 times the effort. Okay? So especially in the diagrams, follow the sequence. There's a flow, there's a logic. And then everything falls in place, the suspense is gone. Is that clear? Have you understood everything discussed so far? Huh? Okay, so let me go further. Next is lateral inversion. Can you see and read the diagram and understand yourself? Which diagram I'm talking about? Page number 101, bottom diagram, last. We are not on. यही diagram है, यही. Must save chapters. Bas. So what is the logic? If the object is closer to the mirror, image will also be closer by the same distance. That's what has been done. Correct? देखो कैसे बन रहा है PS3 में lateral inversion. Okay. So I have a mirror. Then I have a letter P. तो क्या करना है? टॉप पॉइंट से 2 रे ऊपर ले लिया बस. ठीक है. अब मुझे मालूम है इसका इमेज कहाँ पे बनना चाहिए. यहाँ पे बनना चाहिए. OF is equal to FI. जितना मेरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना आगे उतना ही पीछे जाएगा. ठीक है, और पीछे. ठीक है. और ये वाला क्या होगा? क्या बोल रहे हैं? चीटिंग कर सकते हैं. क्या चीटिंग है ये? सर मैंने पहले ही ऐसा पूरा. You have already proven the result. Now you want a neat diagram. तो 4 बार रबर से इरेज करने के बाद बनाने से अच्छा है कि I will set the ground rules right in the beginning. Cheating नहीं है, it is called technique. Techniques are to make your life easy. ठीक है. अब मेरे को ये 2 रेफरेंस पॉइंट मिल गया. एक यहाँ पे मैं स्केल रख दूंगा. ये दोनों लाइन में इधर सॉलिड लाइन और यहाँ पे क्या होगा? इधर भी सॉलिड है. इसको बैकवर्ड एक्सटेंड. ठीक है. फिर यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ? यहाँ से भी 2 रेज लेंगे. स्केल रखो सेम लाइन में. इधर भी स्केल रखो. इसको बैकवर्ड एक्सटेंड. ठीक है. एक्चुअली हमने क्या बनाया यहाँ पे नॉर्मल. अब तुम ये टेक्निक से जाओगे तो तुम्हारा डायग्राम कंप्लीट करने में 3 to 4 टाइम्स लग जाएगा. ठीक है. अब तुम इसको क्या करोगे? तो दिस यू कैन एक्चुअली मार्क एवरी पॉइंट. ये एक चीज रिपीट कर सकते. अब वो करने की जरूरत नहीं. यहाँ से यहाँ तुम क्या करो? तो मेरे को सिमेट्रिक डायग्राम मिल गया. So likewise, I assume I will also get all the points like this. ठीक है. ये टेक्निक है.
और इरिटेट करो मुझे सर ये डायग्राम बनाना जो शुरू किया है दिस इज ओनली वार्मिंग अप where did we come today ऐसा फीलिंग मत दे टीचर को फ्लैट हो जाएगा टीचर यू हैव टू मोटिवेट मी टू टीच यू मोर यू आर सेइंग सर मैं सो जाता हूँ बिस्तरा लेके आया दो सांस और किया पहले Actually, if you go to those architectural designs, buildings, पुराने जो हमारे टेम्पल्स कैसे बनाया होगा ये तो हम पेपर पे कर रहे हैं those guys have done it they have really sculpted it without any flaw and the structures have been standing for thousands of years अगर वो 2-2 मिनट 5-5 मिनट का ब्रेक लेके करता रहा आज तक टेम्पल ही नहीं बन पाता ठीक है बनेगा सर बस दिमाग था जो हमारे पास नहीं है इतना don't underestimate yourself brain is unlimited अगर मैं तुझे तेरा फेवरेट चीज करने को बोल दूं सोएगा क्या तू? हाँ। नहीं चीटिंग करना जिसका जो फेवरेट एक्टिविटी है उसको करने बोल दो वो थकेगा ही नहीं सो फैटीग एंड टायर्डनेस इज अ मेंटल थिंग you're thinking I'm studying since our time like that that's why you're getting tired if you start enjoying get engrossed discover like when you have to go on sightseeing don't get tired so here you're finding excuses to get bored actually I gotta stop so it is so much watching time again and again. That is what is making you restless just ask him since you were born you're like this restless yes and talk to them the parents have you seen different babies some is still quiet everybody loves to play with them better than some are just oh come on taking away you don't want to Were people happy talking to you, taking you all the time along, or they were like, "इसको लेके जाओ यार." What kind of baby were you? लेके जाओ. नहीं, you have to change that. अरे खड़े होके घूम ले भाई अभी घूम ले इसके अंदर हो गया अभी चलिए प्रोसीड ओके अभी जब भी तू कब समझ इंजीनियर बन गया या डॉक्टर बन गया देयर आर डेडलाइंस that every day the costs go up by lakhs of rupees. Each day of work you have to pay salaries. If you do not complete project in time, that's a loss to the company, no? The one who has taken the contract. So everything is going to be time bound now, henceforth. So build that thing in you that we have to complete things on time. Because अपना इंडिया में कैसा है कि like time is one thing which people don't care. वैसा नहीं करना. ठीक है? So instill all those values अभी से. Okay. Right. Next. Any questions still here? So what are the characteristics of the image formed by a plane mirror? Let's list down. Characteristics.
characteristics of image found by plane wave. Right? One. First, it is virtual and direct. Plane mirror में image is always virtual and direct. So then it will have all the associated characteristics. It cannot be obtained on screen, right? And what else? It is of same size. As object. Third, it is at same distance behind the mirror as the object in front. Fourth, it is naturally inverted. What is the meaning of lateral inverted? Horizontal flip, 180-degree inversion. It's not vertical. It's not like this. It's like this. If you watch the image of the pen, you will see it like this. Okay, it's like this. Correct? We saw that. Like अगर E होगा तो image कैसा बनेगा उसका? ऐसा. But if it is a symmetric character, this is also laterally inverted, but since it is symmetric, है ना? It is 180-degree rotation. So it rotates. If you rotate this by 180 degree, it still appears the same. So H, I, again, will appear same. But J, right? G, all of it will appear 180 degree length. We have come a long way and yeah, it is still down there. Vertically flip to real image. Yes, sir. Real is inverted. Yes, लेकिन sir. virtual कैसा रहता है? Upright ही रहता है. ठीक है? So we'll see more details. Next topic is image formed in a pair of mirrors. Like in a saloon, right? How the mirrors are arranged, how the mirrors are placed in a saloon. Let's say you are sitting and facing the mirror here in the front wall, and there is also a mirror fixed on the back wall. So you can see your rear side. Okay, the rear side image is over there. That image is then seen in the front mirror. So you can see your rear view in the front mirror. Okay, that's why you pair of mirrors. We have to now study what are the images formed in pair of mirrors. Changing room में Infinity. पैरेलल मिरर होता है क्या चेंजिंग रूम में? No, Sir, four side में. फोर साइड रहता है उसमें इंफिनिटी होगा. Sir, आगे दिखते रहता है. हाँ क्या मतलब करो? लिखना है. ये भी नहीं लिखा था. मैं वो लिख दिया. ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टी. ओके
ये सब प्रॉपर्टीज है. सेकंड पे लिखिए आप. Also. मैं हो गया सारा. Next, we are going to study image formation by pair of mirrors. So let us say you have two mirrors like this. Right? Let's say this is mirror 1, this is mirror 2. And they have angle between them theta. ठीक है? Then number of images is equal to Okay, 16 times. is equal to 360 divided by theta or 360 divided by theta minus 1. चलो. वो और कैसे लिख सकते हैं? 360 by theta उधर भी 360 by theta minus 1 तब आएगा ना. भाई तो दोनों में से एक लेंगे तो वो डिपेंड करेगा कब लेंगे वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. So there is number of images equal to n or n minus 1. Yeah. And then equal to 360 by. ठीक है. So case 1. N is odd. क्या है केस 1? N is odd. Odd में और दो केस होंगे. Asymmetric. Everybody has spoke. Just to me. Delina है कितने बस? Symmetric और asymmetric placement क्या होता है देखो. If you take the angle by them. If your object is on the angle by them. Or you can place the object somewhere else. So this is called asymmetric placement. And this is called symmetric placement. ठीक है. So when 360 by theta is odd, okay, and the object is placed asymmetrically, then that is the number of images. Number of images equal to any हो. जो odd number है वही हो. Asymmetric. Asymmetric. Symmetric.
n minus 1. Case 2. n is even. अगर तुम्हारा n even आया, then number of वो angle bisector है. This is angle bisector. सर तो नंबर ऑफ इमेजेस n माइनस वन है एंड अगर ऑड n माइनस वन किया तो इवन हो जाएगा. n है 360 by theta. वो n है. लिखा है ना, n is 360. n नंबर ऑफ इमेजेस नहीं है, n जिसका आंसर है. सर पर ऊपर लिखना है कि n नंबर ऑफ इमेजेस. कहाँ लिखा है? सर नहीं होता है सिमेट्रिक प्लेसमेंट के नीचे. लिखा है वेयर n. कहाँ पे? ऊपर ऊपर. हाँ, तो इस केस में जो इस केस में n ही है, मतलब वो जो नंबर आता है वही नंबर ऑफ इमेज. पर ऊपर लिखा है कि n 360 बाय थीटा है. अरे तो वही नंबर ऑफ इमेज होगा, असिमेट्रिक प्लेसमेंट. सर एक एग्जांपल तो ना करते हैं भाई. ये जो है नंबर ऑफ इमेजेस या तो n होगा या n माइनस वन होगा, दोनों में से कोई भी एक होगा ना. तो असिमेट्रिक प्लेसमेंट की अगर देख पहले तेरा n ऑड आ गया, वही नंबर ऑफ इमेजेस होगा अगर ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकली प्लेस्ड है. अगर असिमेट्रिकली प्लेस्ड ना होने की बजाय सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो आंसर n माइनस वन हो जाएगा. ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस रुक जा, वो क्लियर हो जाएगा. पहले लिख, पहले ही उसमें मत कर, अभी पहले लिख दे पूरा, फिर मैं समझाता हूँ. n जब इवन है देन there is always irrespective of the placement. Of yes, symmetric और asymmetric placement. यहाँ पे हम बॉदर ही नहीं करते. ठीक है, पहले थ्योरी होगा फिर एग्जाम्पल आएगा. पहले तुम समझो तो सही क्या करना. बराबर ही दिया है. ठीक, बस बस. ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. पहले लिख लो, लिख लिया होगा. ये क्या है तुम्हारा? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. ये मेरा theta equal to 60 degree. Let's say the angle between these two mirror is 60 degree. तो क्या होगा? तो देखो n कितना आ गया? क्या आ गया? 6. मतलब क्या है? even, that is even. कौन सा केस बन रहा है? सेकंड केस. n even है
नंबर ऑफ इमेजेस क्या आएगा? 5. तो यहाँ पे हमको सिमेट्रिक असिमेट्रिक देखना ही नहीं, एन इवन आ गया तो देखो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 6 - 1 इक्वल टू 5. ठीक है, ये एग्जांपल 1 हो गया. सर पर थीटा का वैल्यू में दे देंगे, गिवन रहेगा. इवन रहेगा ना, वही तो ऐसे ही थोड़ी कर लोगे कुछ. सेकंड एग्जांपल, थीटा इक्वल टू 72 डिग्री. अब क्या होगा? 72. सर ये डिफरेंशियल नहीं है. n इज इक्वल टू क्या होगा? 360 बाय 72. ये हो गया 5. अब n क्या हो गया? ऑड आ गया. ऑड में अब n ऑड आ गया तो इसमें दो केसेस बनेंगे. ठीक है, सो ए में क्या आएगा? If the object is asymmetrically placed, the number of images will be 5 online. ठीक है, जब तुम्हारा n ऑड आता है ना तभी हमको बॉदर करना है असिमेट्रिक और सिमेट्रिक के लिए. अगर इवन आ गया जैसे इस केस में, फर्स्ट केस में 60 जब लिया था तो n मेरा इवन आया. इवन में तो मेरे को एक रिड्यूस करके नंबर ऑफ इमेजेस लिख, सिमेट्रिक असिमेट्रिक उसमें देखना ही नहीं. और बोथ केसेस सिमेट्रिक और असिमेट्रिक उसमें कितना बनेगा? 1 लेस बनेगा. ठीक है, अब यहाँ पे फॉर asymmetric placement, number of images equal to 5 only. सर तो हमें ऑड आया तो दोनों के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा. अलग अलग क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा. क्वेश्चन में पूछा होगा, नहीं पूछा है तो दोनों के लिए लिखना है. फॉर सिमेट्रिक प्लेसमेंट नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा? हाँ, ये मैंने क्यों कराया? क्योंकि वॉल्यूम में टाइपोग्राफिकल एरर है. इसमें नंबर ऑफ इमेजेस को ही n मान लिया है और वो बोल रहे हैं n इज ऑड ऑलवेज. वो सही इंफॉर्मेशन नहीं. दैट्स व्हाई यू नीड टू गो बाय दिस. तो कैंसिल कर देंगे. कैंसिल. नया है क्या? हाँ, ये गड़बड़ है. नंबर ऑफ इमेजेस इज ऑड इन मोस्ट ऑफ द केसेस बट नॉट ऑल ऑफ दिस. ये तुम्हारे बुक में डिस्क्रिप्शन जो दिया है उस हिसाब से. सेकंड बुलेट पॉइंट दिया ना, सेकंड 102 सेकंड बुलेट पॉइंट है. जब भी नंबर ऑफ इमेजेस और गिवन दो केसेस ही बनेंगे. हाँ, ठीक है, और दो केस बनेगा. और कैसे क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से. मोस्टली तुम्हें क्वेश्चन ये इवन वाले आएंगे, उसमें एक सबट्रैक्ट करके लिख दोगे. ये क्लियर हो गया फंडा? बस. So this was the hardest part in this step. The hardest part is now behind me. लेवल बढ़ गया. हाँ, ये कंफ्यूजिंग हो जाता है किसी किसी के लिए. सिमेट्रिक एसिमेट्रिक अभी तो इजी लगेगा ना, आज तो पढ़ाया है. बाद में जब साथ रिकॉल करोगे तो कभी कभी दिक्कत होती है. ठीक है, हाउ मच टाइम वी हैव? सर 2 मिनट्स. ठीक है, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूँ. How many images will be formed when the mirrors are parallel to each other? सर Number of images formed when the mirrors are parallel to each other. Infinite. Why? because each ray What is angle between two parallel mirrors? 0. So 360 by 0 is infinite.
When you divide any given number by 0, what you get is indeterminate value. Infinite. Okay, and that exactly is the case. देखो ये सबका डायग्राम बनाने को आता है। मान लो हमारे पास दो पैरेलल मिरर्स, अभी हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया बीच में, ये ऑब्जेक्ट मान लो मेरा ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है, M1 डैश M2 डैश। अब मैं एक ही मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखता हूँ फॉर सिंपलिसिटी, तो मेरा O का इमेज कहाँ बनेगा, इक्वल डिस्टेंस में यहाँ बनेगा I1, करेक्ट, ये पीछे बन गया। Now this will act, this image will act as virtual object for this mirror. So what is this distance? At equal distance the image will be made here. That will be I2. Now this will become virtual object for M1. तो इसका कहाँ बनेगा अभी? I2 यहाँ बनेगा। Understood? मतलब वो I3 हो जाएगा, थर्ड इमेज। ठीक है? If I consider the ray diagram, दो पॉइंट लेके बनाओ, दो, ठीक है? तो इसका इमेज कहाँ बन जाएगा? यहाँ। ठीक है? अब इसको तुम आगे फिर से रिफ्लेक्ट होगा तो कहाँ बनेगा? ये इधर बनेगा। ये इसको और बड़ा करना है, ये कहाँ बनेगा? कंटिन्यू बाउंसिंग होता है। हाँ, तो ऐसे करके ये चलता रहेगा। So you will find that all the images are actually forming on the perpendicular line, ऐसे सारे इमेज इसी लाइन पे बनेंगे infinitely. That's when when you see yourself in the saloon, all your images are in front of you, infinite. The stream just goes on. It's not changing room because some mirrors होते हैं जिसमें सिर्फ planet होता है। हाँ तो गलत है, ठीक है, लेकिन तुम किस पे फोकस करते हो, पहले वाले या इनफाइनाइट मिरर्स में देखते हो अपने आप को असेस करने के लिए? वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जस्ट टू सी द रियल व्यू, अदरवाइज यू कांट सी योरसेल्फ। आवर आईज आर देयर इन फ्रंट, नॉट लाइक frog. Frog can see 360, we can't do it. Lions. Anybody's ears, like our eyes are not placed here, they are placed in front. We have only close to 180 degree. So we have to make use of our neck. Then we can almost see, but we can't, right now in this position, we can only see about 180 degree, close to. Okay. I'll see you later now. Till 35 minutes. Yes, tomorrow will be last long format session. उसके बाद फिर I don't think there will be long format session. Now there will be, I think, continuous classes for you, 2 hours. हो सकता है आगे जाके. Okay, चलो, I'll see you later. Thank you. I got my. That Name. again, Name. that's all of that is Name. No problem has it. Name. Okay.